Hello students, this is the third video. Before starting this video, whatever we have learned in the previous two videos, let us recall that once. Now we knew that plants are of two types. One are green plants and one are non-green plants, as we have done in the previous videos also. I will show you. Now plants are of two types, green plants and non-green plants. Since green plants can make their own food, they are known as autotrophs, and non-green plants cannot make their own food, that is why they are known as heterotrophs. So here I have written that plants can take food by two ways. One is by autotrophic nutrition and second by heterotrophic nutrition. We have already covered about autotrophic nutrition, so today we are going to learn about heterotrophic nutrition in plants. Now plants show this heterotrophic nutrition, दूसरों से खाना लेना या दूसरों की मदद से खाना लेना, चार तरीके से पाया जाता है. One is saprophytic या फिर उसे हम saprotrophic भी कहते हैं. Second है symbiotic nutrition. Third is parasitic nutrition, and fourth is insectivorous nutrition. So I am going to cover one by one. First, let us focus on saprophytic nutrition or saprotrophic nutrition. अगर इन दोनों वर्ड्स को ध्यान से देखा जाए तो आप देखोगे दोनों वर्ड्स में sapro वर्ड का यूज होता है. There is a word which is used over here, sapro. Sapro का मतलब होता है rotten, जो सड़ रहा है या सड़ चुका है, या फिर उसे हम डेड एंड डिकेइंग भी कहते हैं. ठीक है, तो सैप्रो का मतलब होता है डेड एंड डिकेइंग, मरा हुआ, गला हुआ या फिर जो सड़ रहा है. वैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो रॉटन चीज़ों से अपना पोषण करते हैं या खाना लेते हैं, उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं सैप्रोफाइट्स. अगर सैप्रोफाइटिक है तो उनको कहेंगे सैप्रोफाइट्स. अगर सैप्रोट्रोफिक नाम से बुला रहे हैं तो उनको कहेंगे सैप्रोट्रोफ्स. और जिस तरह का न्यूट्रिशन जो प्रोसेस है इन सड़े गले रॉटन चीज़ों से अपना पोषण करना, उस प्रोसेस को कहते हैं सैप्रोफाइटिक या फिर सैप्रोट्रोफिक. एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगी, आई विल टेल यू वंस मोर. Those living organisms which are taking food from rotten, dead and decaying matter are called as saprophytes or saprotrophs. And this way of taking the food or nutrition is called as saprophytic or saprotrophic. I'll show you one example of a papad that I have. You can see there are brown, white patches over here. You can see carefully. You can see there are white patches over here. See the green white patches over here. So we can see that this papad was rotten one. So these living organisms have started growing on this papad. As you can see, these white green patches. So these living organisms are taking food from this rotten papad. So these living organisms will be called as saprophytes. Okay. Now, how do they digest the food? What do these saprophytes do? They grow on the rotten things, like here in the papad it is growing. They take out or produce a chemical on these rotten substances and then digest the food outside their body. They're not eating the food inside. What they are doing, they are growing on these rotten things and then they are taking out a chemical to break this food outside their body. That is why all these saprophytes or saprotrophs, they go for extracellular digestion. Extra means outside, cellular means cell के बाहर digestion. अपनी body के बाहर वो digestion का process कर रहे हैं with the help of some chemicals. ठीक है, तो ये जितने भी saprophytes और saprotrophs होते हैं उनमें जो न्यूट्रिशन पाया जाता है उसे हम कहते हैं saprophytic nutrition,
और उनमें जो डाइजेशन प्रोसेस होता है उनकी बॉडी से बाहर होता है, क्योंकि जिस सड़े गले चीज़ों के ऊपर ये ग्रो करते हैं उसके ऊपर ये केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं और फिर इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर डाइजेस्ट करते हैं आउटसाइड देयर बॉडी. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन. दैट मीन्स सैप्रोफाइट्स हैव एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन इन देयर बॉडीज. हमारे बॉडी में कैसा होता है, हम खाने को पहले अंदर लेते हैं उसके बाद फिर उसे डाइजेस्ट करते हैं, पर इनमें ऑपोजिट होता है. ये जो भी खाना का डाइजेशन है वो बॉडी के बाहर करेंगे. सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आर मशरूम्स. कहीं पे भी आपने देखा होगा बहुत बारिश के समय में जो रॉटन वुड का पार्टिकल्स होता है उसके ऊपर लकड़ी का टुकड़ा जो कि सड़ रहा है या पानी में भीग चुका है उसके ऊपर मशरूम ग्रो करता है. तो क्योंकि मशरूम कहाँ से खाना ले रहा है, जो आपका सड़ा हुआ लकड़ी है, लकड़ी जो सड़ रहा है उससे वो खाना ले रहा है. इसलिए मशरूम एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल होता है ऑफ सैप्रोट्रॉफ्स, और जिसमें न्यूट्रिशन पाया जाता है सैप्रोट्रोफिक या सैप्रोफाइटिक. वेजिटेबल्स को बहुत दिन तक अगर छोड़ देंगे तो वेजिटेबल्स के ऊपर आप देखोगे कॉटन का एक लेयर बन जाता है. दैट इज़ कॉल्ड एज म्यूकर और पिन मोल्ड. म्यूकर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म which is taking food by saprophytic nutrition. Mucor. Next example, rhizopus. The living organism which I showed on the paper, these white patches, this is an example of a rhizopus. Rhizopus also grows on rotten dough, rotten bread, rotten chapati. If you keep it for some days, you can see there are white green patches over it. So rhizopus is also an example of a living organism which is a saprotroph. Now both this mucor and rhizopus, they are a kind of fungus. I should mention this over here. They are a kind of fungus. Two varieties of fungus. This is all about saprotrophic और saprophytic nutrition. Saprophytic nutrition में sapro word का यूज़ होता है. sapro का मतलब होता है मरा हुआ, सड़ा हुआ चीज़. जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन सड़े हुए चीज़ों से अपना पोषण करते हैं या न्यूट्रिशन लेते हैं उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं सैप्रोफाइट्स या सैप्रोट्रोफ्स, और न्यूट्रिशन को कहते हैं सैप्रोफाइटिक. क्योंकि इनकी बॉडी में डाइजेशन बाहर हो रहा है इसलिए किस तरह का डाइजेशन इनका कहा गया है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन. Examples are mushroom, mucor, rhizopus. Thank you.